हेलो गाइस, ये है मेरी टीवी और मैं इसका 2.5 साल यूज के बाद रिव्यू डाल रहा हूँ। ऐसा आप देख सकते हैं कि ये टीवी मैंने 65,000 में ली थी 26 अक्टूबर 2017 को। और आज डेट है 2020, तो ऑलमोस्ट 3 ईयर के आसपास मैंने इसको यूज किया है। और मैं इसके मुझे पर्सनली इसमें क्या पसंद आया और गलत है मैं बताऊँगा, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ओके, तो इस टीवी का सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा है वो है इसका मैजिक रिमोट। ऐसा आप देख सकते हैं कि इसका मैजिक रिपोर्ट है। लेट मी टर्न ऑन द टीवी। ओके, तो यहाँ ये टीवी स्टार्ट हो गई। ये थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लेती है, ये 1-2 मिनट का टाइम लेती है टीवी को स्टार्ट होने में। ओके गाइस, और ये मैंने इस पर नेटफ्लिक्स को खोला है। इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है या ओके। सो ये इसकी टीवी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ लाइक 4K टीवी, सो इट वर्थ द वैल्यू। इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसमें नेटफ्लिक्स, जैसा आप देख सकते हैं, इसमें नेटफ्लिक्स और जो प्राइम है उसके बटन है, शॉर्टकट बटन है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट। हाँ, इस टीवी में एक इशू जो ये है कि अगर इसको ऑफ़ कर दूँ मैं, अभी इसमें इंटरनेट से मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, और मैं इसको जब ऑन करता हूँ, दिस इज़ द इशू विच आई पर्सनली फेसिंग। या तो जैसे इस टीवी को ऑन करो, और अगर मैं नेटफ्लिक्स या यूट्यूब को खोलता हूँ, तो मैंने इसमें शॉर्टकट बना के रखा है 1 नंबर को, तो ये यूट्यूब स्टार्ट हो गया है 1 नंबर से। तो इसका एक अच्छा फीचर है, क्विक एक्सेस है, आप उससे खोल सकते हैं। तो ये अब नहीं काम करेगी। आई थिंक इसमें कुछ इशू है बिकॉज द टाइमिंग, इट डोंट स्टार्ट डायरेक्टली। एंड दिस इज़ माई एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स विच आई एम राइट नाउ कास्टिंग हेयर। और अब इसमें मैं चलाऊँगा प्राइम, राइट। तो इसमें एक इशू ये है टीवी में कि इसका एक इंटरनेट कनेक्ट था, उसके लिए वर्क अराउंड क्या करना पड़ता है, इसको मुझे ऑफ करके ऑन करके फिर सबसे पहले नेटफ्लिक्स खोलता हूँ, तो वो अपने आप इसकी टाइम का सेटिंग को सही कर देती है। तो आई थिंक इट कुछ सॉफ्टवेयर का हो सकता है कि उसमें कुछ मुझे टाइम शायद स्टैटिक रखना होगा, मैंने डायनेमिक रखा होगा, तो उसके कारण इशू हो सकता है। बट दिस वॉट आई डू। सो अभी आई टर्न ऑन द नेटफ्लिक्स, so then somehow it will fix the internet issue. Yeah, now it will work. Now I can go, I can click on YouTube, and now it will work. एक दूसरा इशू इस टीवी में ये है कि मेरे घर पे 2 वाईफाई हैं, तो ताकि आजकल वर्क फ्रॉम कर रहे हैं तो 2 वाईफाई रखे हैं। तो इसमें अगर आपको नेट कनेक्ट करना है तो एक वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, तो फिर आपको दूसरे वाईफाई से अगर कनेक्ट करना है तो आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, फिर से उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। तो एक इसको मैं अलग कर देता हूँ। जो मैंने लैपटॉप लिया था, हाँ, जब मैं इस टीवी को लिया था, इसका पहला जब सेट आया था उसका HDMI पोर्ट काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने उसको रिप्लेस कराया था। तो आफ्टर टॉकिंग लॉट टू फ्लिपकार्ट गाय, दे फाइनली रिप्लेस इट, बट या इट हैव बीन लिटिल फाइट। और मैं अपने कुछ टाइम में अपना एसएस लैपटॉप का भी रिव्यू डालूंगा जो मैंने भी रिसेंटली लिया हुआ है। तो इसमें अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, और इसके आप सारी सेटिंग में जाके आप इसके नेटवर्क पे जाएंगे, तो आपको, या आप बाय लैन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए अभी एक से कनेक्टेड है, अब दूसरे से कनेक्ट करना है तो उसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। अगर दूसरा एयर व्यू है, अगर मैं उससे कनेक्ट करना चाहूँ तो मुझे उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये दोनों कैसे, अपने लैपटॉप मोबाइल होता है कि रिमेंबर करता पासवर्ड, ये पासवर्ड को रिमेंबर नहीं रखता है। तो आपको मान लो कभी, जैसे मेरे घर पे 2 वाईफाई लगे हुए हैं, या आप किसी जियो से कभी यूज करते हैं, तो अगर आप वाईफाई का सोर्स चेंज करते हैं थोड़ा पेनफुल रहता है, आपको दोनों को उसको चेंज करना पड़ता है। और इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो इसका मैजिक रिमोट। तो इसको आप लिटरली माउस की जैसे यूज कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द रीज़न था कि मैंने लिया था, जब मैंने लिया था तो आई वेंट विथ ब्रांड वैल्यू, सो आई गॉन विथ LG लैपटॉप। बट जब भी मैंने लिया था तो ये 65,000 का था। अब देखते हैं कि सिमिलर का प्राइस क्या है। सो नाउ इफ़ यू गो सेम, सो आई पुट अ फिल्टर,
is 4K TV. This is 4K LG and 49 inch. This is 49 inch, almost 50. So I buy that time at the 65,000 rupees, as you can see over here. And now if you okay, now if you see, this is coming at the 44,000, 45,000, right? And the similar one more is coming at the 46,000. Lekin agar somebody asks me now, okay, what should I buy that time? Maybe I should not go to brand. I should have gone with the other brand. Like, so if you see same filter, I put it here also. And this is the like 4K 48 inch. And now you're getting in just 23,000. It is a Mark Q. It is not like LG, Sony. So yeah, I don't think so. So you can compare the quality, and it has all the Netflix, Disney, Hotstar, all those features are there. अगर मुझे अभी बाई करना होता तो I would have buy not Kodak. I would have maybe gone by BU. Oh yeah, at that time also it was, I think we are getting in 55 inch and 55,000 BU TV. Now if you see, it is right now for 50 inch is coming in 25,000 rupees में आ रहा है. और जो BU का, let me put filter because I like BU brand also, because that is also a good brand and it has some extra feature also too. So अभी जो 55 इंच का है, let's remove this also. Let's move the filter. So yeah, that's how I use my filter. And let's search, put filter for the screen size 55 inch. Yeah, so 55 inch would have come in, yeah, it would have come right now, it's coming in 33,000. And from like screen size, this is a good, I think, size 50 inch or 55 or 65 inch is good. And yeah, you can use it for viewing. It's not looks too weird. You can watch it even from 2 meter distance. But movie, if you really like to feel 4K quality, you have to watch in from very close distance. Then you're able to see. And the 4K content in India, maybe only you get in Prime में मिलता आपको केवल. Netflix में also Netflix original only come in the 4K. So otherwise in India, YouTube also you get 4K content. But yeah, TV still channels are not coming in the 4K. तो इसके मैं आपको कनेक्टिविटी पोर्ट दिखाता हूँ. तो इसके साथ आपको मिलती है 1 USB ड्राइव, जिससे मेरा कि ये 2 TB का साटा कनेक्ट, ये पासपोर्ट कनेक्ट है. और इसमें 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं. और आपको पीछे TV कनेक्ट का लैन वायर का, और ये जो स्टैंडर्ड होते हैं कनेक्शन, वो कनेक्शन मिलते हैं. और इसके साथ ये वर्टिकली माउंट करने के लिए, वर्टिकली माउंट आता है तो आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेता. और इसके साथ में इसके नीचे के भी आते हैं, आप इसको नीचे रख सकते हैं. लेकिन वर्टिकली माउंटेड इज़ बेटर, यू कैन यूज एज ए फ्रेम. And picture quality is good, but okay, so this is the, and so what are the good thing about this? Yeah, quality is good, yeah, price is more, and this is good, and you can see screen is good. So what matter in the smart TV is screen. Tomorrow maybe your software update you won't get, then you can use some TV box there. So now let's compare its quality, right? So it is good, 4K is good for watching the video and everything, but you cannot use as a laptop. So let me connect same thing on laptop by HDMI. So friends, इसको मैंने अपनी HDMI TV से कनेक्ट कर दिया है. अब मुझे इस पे जाना पड़ेगा और I have to select the setup box, because right now HDMI 1 is there. This is connected setup box and this is connected. So you can see see it is getting some glossary effect, but you cannot use it as a screen because it is not good for eye. And if you like to see 4K in way, right, we can do setting and we can say it's 4K TV, but it is not good for, like, you cannot do it as a like monitor. So let me set it to 4K setting. Just give us 1 second. So I go over here, let me do extended. So yeah, let me connect it to extended video. Okay, and now let's say display setting. We go, okay, let's put this 2 TV this side,
and let's set it resolution to highest possible. So right now it is recommended, let's make it to 100%. So this is the best, this is the like what you can get in this. Okay, so now let's open the same Facebook, the Flipkart link here, right? And let's move this to other window. Okay, I think this is this side. So you can see, guys, right, what is the difference is coming. You can just see 3N item over here, but if you're seeing on the 4K screen, you will see much more item. But most of the page they designed for this much width, so you can see that it is not coming complete width, right? So because this page are designed for this purpose only. So if you see here, okay, so yeah, so even if you go here, right, but yeah, so your website should be designed, right? So it is designed for. Let's try to open Amazon on the other side. Let's see how it comes in the Amazon. Okay, F11 T Amazon F6 F11. Yeah, so you can see that here also you can see the page are coming like this only. But if you open your Gmail, or let's open YouTube, because yeah, so yeah, if you see the YouTube over here, yeah, you can see much more content because this is little optimized, right? You can see in the full screen. And if we open same thing on this screen, so let's see how much we see. Yeah, so you can see like only 8 videos are coming here, right? But if you see here, so many videos are coming. And yeah, so this is magic. Remote control is there. And yeah, you can also install your LG app on your mobile, and you can control it. You have to connect the same Wi-Fi. And one more problem with this, if you go to browser, right, let's go to this browser. I close this thing. If you go to browser and if you open G5, if you cannot watch on the browser because browser is not that great. So just say let's open YouTube here. Okay, yeah. So yeah, you can see YouTube will see very big. Let's read some news. I cannot read. Let's say quick info, and you will see only this much information, which is very less. And this is a 4K TV, and this laptop is just 1K, so it should be like showing 4 times data. Just let open quick info here also. Quick info, Kickbuzz, sorry, Kickbuzz. I don't watch much .com. So yeah, you can see more in this content, right? This image is cutting here, but this image is not cutting here, but this image is cutting here. And you cannot this is not fully fledged browser, so you cannot use Zoom or any app you would like to use because it don't support full JavaScript. So you can see only very few sites. You cannot open site which require Flash and things. So this is very basic browser, so I don't think is a replacement of this thing. And I thought of I'll do coding on the mobile, and you have to literally sit near the screen, and it is not good for viewing angle. Yeah, so that if you want to know, you have to see what even pixels are there, that how many colors is there. So you cannot compare this quality with, even this is 4K with your laptop quality, because in the
16 boxes TV of equal to is one boxes of this laptop. So that is better this different LED. Yeah, but yeah, and TV also you get a much higher costly QLED TV. I think they are the TVs are there which you can use as a laptop. So this is one more of the one more of the review. Yeah, and you have a App Store, but in LG contained App Store, you won't find many great content, right? So let's see. Yeah, see Disney Start come now. It was not earlier, but installed right now. It automatically get installed. I don't know. And yeah, G5, all those apps are there. You can go to his store also. LG content store, but yeah, they are coming, but it's not. Don't expect all Play Store app will be there. And yeah, so one thing I have this this uh, Airtel box, which is Extreme box, and this also come with a smart TV, right? So you can go on this. Oh, I have to change. Let me. I have to make the connection to my this laptop. So I connected HDMI to my this box. Okay, now let me open the setup box, because I just connected setup box. And yeah, this is also you can, this is little better because you can play all the games, well, not all the games, but whatever the TV games are there, you can play. So I like to play even Geo Cinema also here, so you can use this thing. And I like this game, but don't consider this game's experience will be like you are playing on the mobile. But yeah, this is the very simple game, because in this you just need to press one button, so that you can use playing by this central button. So such kind of game you can play, which is just required. So this game I like, and yeah, you can play this game. Yeah. Okay. Yeah, so you can play this game, exit, cancel game, cancel. Let's play single player game. Okay. Okay, let's say this game we are playing. Yeah, resume. So this is just require one button, because this is like Flappy Bird kind of app game is there. Let me turn on the volume also. Volume is also nice. Yeah, so you can play game 2 on this. So yeah, these are the thing, but yeah, yeah, you can. Yep, if you're using Airtel box, it's not, if you are not recharging this, you cannot use the any of a store, right? It can even, it has your casting to screen to, from mobile you can cast your screen to your TV to this thing, and sound will get. But yeah, Geo 5 and Netflix, they will not be casting, because yeah, Geo TV they will not casting. So thanks guy, and this is my review. And yeah, so I will keep posting this kind of review, and next time I will upload my video of my this Asus laptop which I recently bought. Thank you guys.